Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं HR इंटरव्यू क्वेश्चंस, कौन से बिहेवियरल क्वेश्चंस। एक रिक्वेस्ट आ रही है सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो यार सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस के तो बहुत सारे सेशंस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। यस, 17-18 सेशंस हैं वो, और मैं वो पिन कमेंट में डाल दूंगी। कम्युनिटी सेक्शन में मैंने पूछा तो आपने बताया कि भाई बहुत सारे सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए हमें, तो ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो प्लीज उन्हें देख लें, पिन कमेंट में मिल जाएंगे आपको। और आज हम देखते हैं कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस, राइट। सो चलिए सबसे पहले चलते हैं और इसका पैटर्न भी देख लेंगे, समझ लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आंसर करने का क्या तरीका होता है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है ये, कैन यू टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड टू डील विद अ डिफिकल्ट कोवर्कर। डिफिकल्ट कोवर्कर क्या मतलब, कुछ समझाने से नहीं समझते, कुछ डिफरेंट ही एक्टिविटीज रहती हैं, ऐसे कोवर्कर्स जो नॉर्मली काम नहीं करते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप कैसे डील करेंगे। आई वंस वर्कड एट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी वेयर आई हैड अ कोवर्कर who consistently missed deadlines and was difficult to communicate with. I knew that this was impacting our team's productivity and morale, so I decided to take action. I approached my coworker privately and explained my concerns in a calm and professional manner. We worked together to create a plan for better communication and set more realistic deadlines. However, despite our best efforts, the issues persisted। मतलब बेसिक नेचर तो नेचर ही रहेगा ना, आप कितनी चीजें प्लान आउट करने की कोशिश करो, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि एकदम हो जाए, राइट। सो ये है कि आपका सबसे पहला तो एफर्ट ये था कि आपने अप्रोच करा प्राइवेटली उस कोवर्कर को, ठीक है, ये बहुत बेस्ट चीज है। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। आई देन स्पोक विद आवर मैनेजर, क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं हो पाया मैटर, तो अब फिर मैनेजर को बताना जरूरी है। हु हेल्प्ड अस सेट अप द रेगुलर check-ins and offered additional support and resources to help my co-worker meet their goals. In the end, we were able to find a solution that worked for everyone, and our team was able to meet our deadlines and work more effectively together. This experience taught me the importance of clear communication and collaboration in the workplace, even when faced with difficult challenges. I learned to approach issues with empathy and an open mind and to seek out support when needed. बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग बताना। हर एक आंसर को आप चाहे इतना बड़ा ना बोलें। ये एक सैम्पल आंसर है जहाँ पे मैंने एक सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। आप इसे बहुत शॉर्ट कर सकते हैं कि भाई एक कोवर्कर था एंड आई अप्रोच्ड हिम एंड द मैनेजर, और उसके बाद मैंने बात की, फिर सपोर्ट मिला। इसको छोटा कर सकते हैं और उसके बाद फिर चीजें सॉल्व हो गई और वहां से मैंने क्या लर्न आउट किया। तो लर्निंग्स मेंशन करना बहुत जरूरी है, एक सिचुएशन बताना और उसके बाद लर्निंग बताना, क्योंकि बिहेवियरल चीजों से अक्सर हमें लर्निंग्स ही मिलती हैं, राइट। और वो लर्निंग्स लेनी जरूरी है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, in my previous job I had a coworker who had a tendency to micromanage and criticize my work, which made it difficult for me to perform my duties effectively. At first, I tried to ignore their behavior and focus on my work, but eventually it became clear that I needed to address the issue. I scheduled a private meeting with my coworker to discuss my concerns and ask for their feedback on my performance. During the meeting, I tried to approach the conversation with an open mind and a willingness to listen their perspective. However, I also made it clear that their behavior was impacting my ability to do my job and that I needed their support to work effectively. We were able to have a productive conversation and come up with a plan to improve our communication and collaboration going forward. I made a conscious effort to keep them informed of my progress and seek their feedback regularly, which helped to build trust between us. I learned the importance of proactive communication and conflict resolution in the workplace. राइट, यहाँ पे भी आप इसे छोटा ड्राफ्ट कर सकते हैं। सैम्पल आंसर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको ये पूरी पूरी कहानियां याद करके वहां बोलनी है। ये एक आइडिया है कि किस तरीके की सिचुएशन को आप वहां मेंशन कर सकते हैं और उसमें से कंक्लूजन एंड लर्निंग्स बता सकते हैं। सेकंड, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। Stressful situations are a natural part of any workplace that I have learned to develop strategies for managing them effectively. When I'm feeling overwhelmed or stressed, I find it helpful to take a step back, prioritize my task, and focus on the most important things first. I also like to take a short break to clear my head and refocus my energy. For example, in my previous job, we had a project deadline that was approaching quickly, and there were unexpected issues that arose that put the project at risk.
I realized that the best approach was to take a step back, assess the situation and prioritize the issues that needed to be addressed immediately. क्या करा, रुके, देखा, बैक करा, स्टेप देखा और फिर प्रायोरिटाइज किया और फिर एड्रेस करा, राइट. आई ऑल्सो डेलीगेटेड सम टास्क टू माई टीम मेंबर्स सो दैट वी कुड वर्क टुगेदर टू गेट एवरीथिंग डन ऑन टाइम. ये नहीं है कि खुद खुद करे जा रहे हैं, डेलीगेट करिए काम तभी काम बनेगा. वाइल द सिचुएशन वाज स्ट्रेसफुल वी वर एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड डिलीवर हाई क्वालिटी वर्क. I realized that clear communication and a collaborative approach were key to our success. Okay? So ये इसके आगे आप ये वाला पैटर्न यूज करके कुछ और भी इसमें यूज कर सकते हैं, कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं यहाँ से, और ये पैटर्न यूज कर सकते हैं कि इस तरीके से हम बता सकते हैं, जो आपका वे हो आप उसे भी बता सकते हैं, राइट. चलिए थर्ड, कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू अडैप्ट टू अ चेंज इन द वर्क प्लेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कोई चेंज लाना है तो बहुत दिक्कत होती है. In my previous job, our company underwent a major restructuring that impacted my role and responsibilities. I went from managing a small team to working independently on a new project that required a different set of skills and knowledge. बिल्कुल different का काम. At first, the change was challenging. I felt overwhelmed by the new workload and unsure of how to approach the project. However, I quickly realized that I needed to adapt to the new situation in order to succeed. Right? Changes करने पड़ेंगे. I reached out to my colleagues who had more experience with the project and asked for their guidance and support. I also sought out training and mentorship opportunities to help me develop the new skills I needed. ये नहीं है कि बस मैं करे जा रही हूँ, नहीं हो रहा तो बस जिसको एक्सपीरियंस है उन्हें रीच आउट करो, उनसे सपोर्ट लो. Over time, I was able to adapt to the change and successfully complete the project. I learned a lot about my own strengths and weaknesses, as well as the importance of being proactive and seeking out support when faced with a new challenge. This experience taught me the value of being flexible and adaptable in the workplace. I have since become more comfortable with change and I'm always looking for new opportunities to learn and grow in my career, right? ज़रूरी नहीं है आप इतना बड़ा लिखें, आप इसमें से कुछ चीज़ें पिक कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे चेंजेस की प्रॉब्लम आई, मैंने सोचा, मैंने उसको चेंजेस में डाला, मैंने एक्सपीरियंस यूज़ किया कलीग्स का और फिर बस वो काम बन गया एंड मैंने ये लर्न किया. ओके, सो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर यू डोंट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन. जहां हम क्वेश्चन नहीं जानते, ये बहुत ही फनी भी हो सकता है, मतलब वहां पे भी हो सकता है आपसे कुछ पूछा जाए और आपको नहीं आता हो तो भी इसका आंसर ये हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ आई एनकाउंटर्ड अ सिचुएशन वेयर आई डिडंट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन, माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट वुड बी to be honest and transparent. हमेशा honest and transparent रहना है. I would let the person know that I am not sure of the answer, but that I would be happy to look into it and get back to them as soon as possible. जैसा कि कई बार ऐसा होता है, कॉल आती है, हमें नहीं पता होता, हम कहते हैं हाँ भाई सीनियर से डिस्कस करके हम बताएंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप कह सकते हैं बात. I see situations where I don't know the answer as an opportunity to learn and expand my knowledge. I'm always eager to improve my skills and understanding of the job. And I believe that being open and transparent about what I don't know is the first step to achieving that. Yes, open and transparent होना जरूरी है. अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो लर्न कैसे करेंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज फिफ्थ. Can you describe a time when you had to work with a difficult supervisor or manager? Now this is very common. ये तो बहुत ही common है कि difficult supervisor या manager बन सकते हैं. Normally सबको ऐसा लगता है difficult है, तो उन्हें कैसे handle किया जाए. In my previous job, I worked with a supervisor who had a very different work style and personality than my own. Right? We had a different approaches to problem solving and communication, which led to some conflicts and misunderstandings. Now see, यहाँ पे different work style and personality बोल दिया आपने. आप कुछ negative use करें, इससे better ये है कि different work style है, different personality है, ये words use कर दें. To address the situation, I first tried to have a direct conversation with my supervisor. I expressed my concerns and suggested some potential solutions to improve our working relationship. However, this approach did not lead to significant improvement and the situation continued to be challenging. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने बात करी और एकदम से सॉल्व हो जाएगी, राइट? सो ये रही चैलेंजिंग. At this point, I sought out support from colleagues and human resources, right? I shared my concerns and asked for advice on how to navigate the situation with professionalism and tact. I also focused on my own behavior and communication, ensuring that I was clear and respectful in my interactions with my supervisor. ऐसा नहीं है कि मैं irritate हो गया, aggressive हो गया, मैंने देखा कि भाई मेरा behavior भी normal रहे. Okay? कैसे बताएंगे आगे? While the situation did not completely resolve,
I was able to find some small improvements in our working relationship. I learned a lot about the importance of communication and collaboration, even in challenging situations, and I developed new skills in conflict resolution एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. क्या हुआ, मैंने ये वाली टाइप की जो स्किल्स थी ये गेन कर ली. ओवर द टाइम चीजें ठीक होने लगी. दिस एक्सपीरियंस टॉट मी द वैल्यू ऑफ बीइंग एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल इन द वर्क प्लेस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सीकिंग अप सपोर्ट एंड रिसोर्सेज व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट सिचुएशंस. नाउ सी यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हुआ, जो आपने बात की थी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जरूर आया है. आपने जो कलीग्स को इन्वॉल्व किया, ह्यूमन रिसोर्स को किया, वो किया, और अपने बिहेवियर को भी मॉनिटर किया. उन सब का मिलाकर यहाँ पे ओवर द लॉन्ग रन ही इम्पैक्ट आता है. एकदम से कुछ भी रिजॉल्व नहीं होता. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हैव यू एवर हैड टू वर्क विद समवन हु वाजंट वेरी गुड एट कम्युनिकेटिंग, व्हाट हैपेंड. ये तो बहुत नॉर्मल है कि भाई किसी का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, अपना काम जानते हैं लेकिन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है. तो क्या है, आई हैव डेफिनेटली हैड सिचुएशंस वेयर आई हैव वर्कड विद समवन हु स्ट्रगल्ड विद कम्युनिकेशन. In one project I worked on, and I was paired with a colleague who was brilliant technically but had trouble expressing their ideas and collaborating effectively with the team. Right? कोलैबोरेट करने में प्रॉब्लम थी, एक्सप्रेस करने में बहुत थी. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम में बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं, लेकिन जहां बात आती है एक्सप्रेस करने की उस चीज को, वो वहां लैक कर जाते हैं. द बिगेस्ट चैलेंज वी फेस वाज दैट वी वर वर्किंग ऑन अ टाइट डेडलाइन एंड वी नीडेड एवरीवन्स इनपुट टू मीट द डेडलाइन. However, my colleagues struggled to communicate their ideas clearly, which made it difficult for us to integrate their work into the project. To address the situation, क्या करा भाई? I first tried to have a direct conversation with my colleague. I expressed my concerns and offered to provide additional support and guidance as needed. I also suggested that we work together more closely to ensure that we were both on the same page. बहुत ज़रूरी है. When this approach didn't work, I sought out additional resources and support from colleagues and management. Right? अगर ये नहीं काम करेगा तो मैंने क्या किया? We were able to develop a communication plan and strategy that helped to improve the flow of information and collaboration within the team. While we still face some challenges due to my colleagues' communication struggles, we were able to complete the project successfully and meet our deadline. बहुत नॉर्मल है क्योंकि एकदम से किसी का कम्युनिकेशन तो आप इम्प्रूव नहीं कर देंगे, किसी का बेसिक नेचर नहीं कर सकते, राइट. बट स्टिल काम हो गया हमारा, धीरे धीरे चीज़ें फ्लो में आ गई. Through this experience, I learned the importance of patience, empathy, and collaboration when working with colleagues who struggle with communication, and I developed some new skills in conflict resolution and relationship मैनेजमेंट. ये सब मैंने न्यू लर्न कर लिया और ये सब मैंने यहाँ से सीखा. पेशेंस बहुत ज़रूरी था ऐसे पर्सन के साथ काम करने में. 7th, tell me about a time you had to solve a difficult problem at work. In my previous role, I was working on a project where we experiencing a significant issue with our data management system. Right? ये difficult problem थी. The system had been implemented a few years earlier, and it was becoming increasingly difficult to maintain and scale as our organization grew. To solve the problem, I first conducted a thorough analysis of the system to identify the root cause of the issue. I consulted with stakeholders across the organization, including IT, finance, and operations, to gather insights and feedback. Based on that analysis, I developed a plan to update and streamline the system to make it more efficient and effective. I encountered several challenges along the way. बहुत सारे challenges आने ही थे. For example, we had limited resources and a tight timeline, which made it difficult to implement the changes quickly. Additionally, there was a resistance from some stakeholders who were hesitant to adopt new technologies and processes. Yes, बहुत stakeholders नहीं होते comfortable. Despite these challenges, I was able to successfully implement the updated system. The new system resulted in significant improvements in our data management and reporting capabilities, which had a positive impact on organization's performance and bottom line. Through this experience, क्या learn किया? I learned the importance of collaboration, stakeholder management, and creative problem solving. I have since applied these skills to other projects, and I feel confident that I can handle any difficult problems that come my way in the future. Okay? So next question, 8th. Describe a time when you had to work under pressure to meet a deadline. In my previous role, I was part of a team that was responsible for delivering a major project for a client. We had a tight deadline to deliver the project, and there was a lot of pressure on us to meet it. Obviously, होगा ही होगा pressure. To ensure that we could meet the deadline, I worked closely with my team members to establish clear roles and responsibilities and create a detailed project plan. हमने क्या करा? Clear responsibilities और roles divide कर लिए, discuss कर लिए. We also set up regular check-ins to monitor our progress and to identify any potential roadblocks. During the project, we encountered several challenges that tested our ability to work under pressure.
For example, we had to deal with unexpected technical issues that delayed our progress, and we also had to manage changes to the client's requirements that added extra work to our already tight schedule, right? अब क्या हुआ? Despite these challenges, we were able to successfully deliver the project on time. Our client was extremely satisfied with the results, and our team was commended for our hard work and dedication. Through this experience, क्या learn किया? I learned the importance of clear communication, collaboration, adaptability, and when working under pressure. I have since applied these skills to other projects, and I feel confident that I can handle any tight deadlines that come my way in the future. Okay, यहाँ से आपने बता दिया कि भाई आगे भी मैं इस तरीके की चीज़ें हैंडल करने में बहुत कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे किया है. ओके, यहाँ पे आप अपना कोई भी एग्जाम्पल रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी अलग यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ एक पैटर्न है. टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू गिव क्रिटिकल फीडबैक टू अ कोवर्कर और टीम मेंबर. क्रिटिकल, बहुत ही सेंसिटिव फीडबैक आपको देना था, बहुत ज़रूरी फीडबैक आपको कोवर्कर और टीम मेंबर को देना था, तो कैसे दिया? इन माई प्रीवियस रोल आई हैड अ टीम मेंबर हु वाज कंसिस्टेंटली मिसिंग डेडलाइंस एंड नॉट फॉलोइंग थ्रू ऑन कमिटमेंट्स As the project lead, I knew that I needed to have a conversation with them to address this issue and provide critical feedback. Okay. Before having the conversation, I took some time to gather information about the situation and to reflect on how to approach the conversation in a constructive way. I also spoke to some of the team members who had been affected by the missed deadlines to gather their perspectives. During the conversation, I used specific examples to illustrate my concerns and to make it clear that the feedback was coming from a place of care and concern. I also asked the team member for their perspective on the situation and actively listened to their response. ऐसा नहीं है बस थोप दिया उठा के ऐसा कर रहे हो वैसा कर रही हो, राइट? पहले सारी चीज़ें प्रॉपर रख ली और उसके बाद ही आपने डिस्कस किया ये चीज़. As a result of the conversation, the team member was able to take steps to improve their performance and to meet their commitments. They also felt more empowered to communicate proactively with the team about any potential roadblocks that might impact their ability to deliver. Through this experience, I learned the importance of approaching critical feedback with empathy and respect. I have since applied these skills to other situations, and I feel confident that I can deliver constructive feedback in a way that helps my co-workers and team members to grow and develop. Right? क्योंकि मैंने ऐसा किया है और ये सक्सेसफुल रहा, तो मैं नेक्स्ट किसी में भी ऐसा कर सकता हूँ, अपने को-वर्कर्स को हेल्प कर सकता हूँ, टीम मेंबर्स को हेल्प कर सकता हूँ. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. 10th, आप अपने कोई भी आंसर्स उससे रिप्लेस कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये कोई सेट पैटर्न है, कोई क्वेश्चन बैंक है, कोई चीट शीट है. ओके, हैव यू एवर मेड अ मिस्टेक इन हाउ यू हैंडल इट? सी, मिस्टेक बहुत नॉर्मल है, आप ये कहीं नहीं है तो साउंड राइट नहीं होता और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ से फिर आपको ये बताना ज़रूरी है कि मिस्टेक हुई तो क्या हुआ और हमने कैसे कर दिया. इसको शॉर्ट रख के बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप बहुत बड़ी स्टोरी ड्राफ्ट कर दें. राइट? येस, आई हैव मेड अ मिस्टेक इन द पास्ट. In my previous job, I missed an important deadline that resulted in the delay of the project. I took full responsibility for my actions and communicated the mistake to my team and supervisor. I immediately began to work on finding a solution and worked overtime to ensure that the project is completed within the new deadline. बस इतनी सी बात की डेडलाइन मिस हुई थी, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, फिर मैं तुरंत लग गया उसका सोल्यूशन फाइंड करने में, ओवरटाइम करके मैंने उसको सेटल करा. क्या हो सकता है इसमें, राइट? फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस आई लर्नड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग टास्क, मैनेजिंग माई टाइम एफिशिएंटली एंड डबल चेकिंग माई वर्क टू अवॉइड सिमिलर मिस्टेक्स इन द फ्यूचर. राइट? प्रायोरिटाइज करना, मैनेज करना टाइम इफेक्टिवली, ये सारी चीज़ें स्किल्स में मांगी जाती हैं. इन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. यहाँ पे कोई भी आप ऊपर अपना सैम्पल आंसर डाल सकते हैं, कोई और भी आंसर हो सकता है, कुछ भी आप बता सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को फोकस करेंगे जो मैंने ये रेड में लिखी हैं तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा. ओके, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल. एंड सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वहाँ से देख सकते हैं. और कौन से क्वेश्चंस देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं. Till next video, all the very best. Stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.